ओ लग्गी जोहार। भारत देश में प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने, पोषित करने और विकसित करने का अधिकार प्राप्त है। वे उससे अपने तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। जेफरन्यूस बाखला उर्फ एतवा उरांव ने इस अधिकार को समझा और आज से लगभग 25 वर्ष पहले लूरडिप्पा स्कूल की स्थापना की। यह झारखंड राज्य में गुमला से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल में ग्राम भागीटोली डुमरी में स्थित है। इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम कुड़ुख और अंग्रेजी है। स्कूली शिक्षा के अलावे बच्चों को मातृभाषा उरांव यानी कुड़ुख, उरांव संस्कृति, खेलकूद और व्यवहारिक शिक्षा से पारंगत की जाती है। 26 जनवरी 2023 को लूरडिप्पा स्कूल उरांव आदिवासी तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया। आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि यह स्कूल आदिवासी स्टाइल का एक अनोखा स्कूल है। पूरे समारोह के दौरान स्कूल के बच्चे, शिक्षक और अन्य स्टाफ आदिवासी वेशभूषा में दिखे। बच्चों के भाषण, वाद्य यंत्रों, नृत्यों, गीतों, परेड और नारों में आदिवासी छाप दिखाई दिया। कुड़ुख के साथ साथ अंग्रेजी में स्कूल प्रेयर करना, फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण देना इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में भी निपुण होते हैं। स्कूल शुरू होने से पहले बच्चे कुड़ुख या अंग्रेजी में सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी धर्म में प्रार्थना करते हैं। समारोह के दिन विद्यार्थियों के द्वारा गाया हुआ अंग्रेजी में यह प्रार्थना देखिए। गणतंत्र दिवस समारोह के शुरुआत में तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। देखिए किस प्रकार से राष्ट्रगान बच्चे गा रहे हैं। Yeah.
प्रजातंत्र एक परिवार के समान है, जहां परिवार के प्रत्येक सदस्यों को कुछ जिम्मेदारियों के साथ कर्तव्य भी होते हैं और परिवार के छोटे बड़े सभी को समान अधिकार होते हैं। भारत का संविधान भी ऐसा ही है और प्रत्येक नागरिकों के लिए समान रूप से लागू है। आदिवासियों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची से अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये बातें ध्वजारोहण के समय डॉक्टर एथवा उरांव ने कही। My dear teachers, manager of the school, headmaster of the school, all the elders present here, media persons, and all our guests who are come from far, and you, my dear children, boys and girls. The genesis of human race is accepted to be the confluence of the river Tigris and Euphrates. There a family began. The family grew, and to manage that family and to see to the future of that family, when it became overextended, they began to organize themselves into what is called a governance called democracy, where everyone has an equal right, just as the 5 fingers of the hand, though small and big, all have the equal right and function. So also in a family, all the members are equal, whether they are small, whether they are intelligent, less intelligent, less physically capable, or they are absolutely capable. But all have equal rights, and from this concept of democracy, the Greek world, under the guidance or leadership of Aristotle, they said there should be a democracy where each one is given as per his contribution and capacity. And therefore, supposing in a cricket world, Virat Kohli is the best player, then his payment will be certainly higher than others. So they say it is justice, it is moral that he deserves more, so he should be given more. But then there was a group of Greeks who said, what about less capable people? What about people who cannot do anything? Can we only go on rewarding the great people, capable people, and leave aside those who are unfortunate? It is not their fault that they are born in that condition as human beings. And therefore, one concept emerged, and that is called res publica. Res publica means things of the people, and to manage the things of the people in a human manner. They thought of the rules and regulations called the Constitution. And in the Constitution, everyone should have equal rights as human beings, as per capacity, and also even if they don't deserve, out of compassion. And therefore constitutions were formed, and today in India, Republic Day is also the day of the Constitution, because today the government of India accepted all the 395 articles of the Indian Constitution and also the 12 schedules. And we Adivasis of this area, Central India, are under the 5th schedule, and Adivasis of Northeast India are in the 6th schedule, and we have got a special place in this family. And therefore, unless
there is a maintenance of family atmosphere in the country where every individual and every group is taken care of and government sees to the development and also protection of the family members of the family, then there is no democracy. It can take the form of dictatorship by the majority or even dictatorship by a single person in the country or dictatorship by a few. Ordinary people can just cast a vote, but after that they have no responsibility or no value. To ward off this one, there should be constant reference to the public, and therefore there are different constitutions in the world which take care of the individual freedom. Like in USA, individual has absolute freedom, and there are areas where they take care of the community. So countries are organized according to the linguistic community, cultural community, and they look after themselves in a family manner. But of course, as I have said in the beginning, there is a family or human family, and therefore, first of all, there should be a human behavior. Everyone should be given that human dignity and possibility of developing as a human person and be free himself and promote freedom in the community in absolute harmony. And that is the purpose. If you really look at the government and if you actually look at any organization, there is one principle, and that is the care and concern for every individual. For this, we have to not only ask for our rights, but we have also certain duties towards one another, towards the community, towards the place which is called country, towards the government which is people organizes are organized is called government, and towards the moral principle that should guide the country. In fact, in certain countries like Israel, their moral principles are also part of the country's constitution. झंडा फहराने के बाद छात्र छात्राओं ने परेड किया और तिरंगे की सलामी दी।
इस मौके पर एक छात्रा ने शुद्ध कुड़ुक भाषा में भाषण दिया। चुन्हा जोगे लूर कुड़िया और ननु फादर जे बकला लूर कुड़िया मुंडा लूर कुड़िया ता लूर गड़िया लूर कुड़िया ता और माँ बाजू कूटी बारी की बरका और माँ आयन बंग आरा भाई बहन बगारो और मारिंदा बाकेन इन देशों मागे चंदो इदा तो 26 जनवरी नम्हे भारत देश ढाई सुटी चार कुटी अंग्रेजिया के किताबें नू रचा अंग्रेजिया में विचार में से नमे राजी मना लगिया आर अकाइजेंट रचर आर गुसंधिबा गौड़ी रचा नमे राजी नु बला की आर एंदा का इसन राजी चला बागा गही इंडियन एंड कानून हो मल्ला राजी बेड़ार की रही आर इसन ढेर चांद कुटी राजी नंजर फूकानो नमे राजी का आदर एरिया की बिगर एंड कानून कमसका की राजी चला बाना अके बेहारी आउंगी नमे राजी दा जो आलत एकासी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आरा महात्मा गांधी गुठियर एंड कुची टूडा हेरत आर की ई एंड कुची टूडा नु एक चार दोई ओन चलो दोई आ खुल्ला लगिया ई एंड नु नमे आदिवासी के 5वीं अनुसूची ढेर बगे एंड मंचकी रही एकासी का छकराना कोच एनसी एक्ट संथाल प्रज्ञा एनसी एक्ट नमे कुड़खर के पढ़ा शासन व्यवस्था जे पहली टीम रचा अधिनियम आरनामा के अन्य राजिचर नमे अपन शासन व्यवस्था संस्कृति रीति रिवाज और परंपरा रही अन्नु आर खंड कुंडमान मंजर ईद नमे अति पर्या दिन चलते बरा लगी और आ शासन व्यवस्था अकुढ़ो नमा के अन्य रही मगे ना उच्चा उक्का का चढ़ा के बल्ला लगता नमे एक कानून अंबर की दूसरा के जे कानून पंच की रही आ कानून ना पैदारा लगता और जिस सरकार नमे परिहन एरा की तंगे मनमानी शासन नना लगी अंतिम नाम एतरक नमे अधिकार न हो और नमे अधिकार बसे राज्य चला बोल जय गुरु जय भारत जय झारखंड बिरसा मुंडा सही जय वीर बुद्धू मेला सही जय जनता खड़िया सही जय सिपी दुकेश सही जय सिद्धू कनुदिया भाइयों सही जय सिंकी दाई सही जय अलबर्टिका सही जय लाबाकेन। उसके बाद दूसरी छात्रा ने भी अंग्रेजी में भाषण दिया। Father J. Bakla, founder of the school, honorable chief guest, respected teachers, staff members, parents, and my dear friends. Today on 26th January 2023, we are celebrating the 75th anniversary of Indian Republic Day. On this day, our heart is filled with joy. In India, this day is celebrated with great pomp and joy. There is jubilant atmosphere all over the country on this day. Why? The constitution of our country was implemented on 26 January 1950. Earlier, we were governed by white people who had their own laws. They treated Indians with brutality. We were suppressed, oppressed, and forced to act according to their will. There are many events witnessing their crooked mind and brutality. In fact, they were traders, but disunity among rulers of our country availed an opportunity to overpower on us. Thus, we became slaves of British rulers. Ill treatment, brutality, and many other evils formed the freedom fighting, which gave birth to many zealous and stubborn leaders who fought against British rule. And finally, the clutch of slavery was broken on 15th August 1947, when white people were forced to go back to England. Indian political leaders and scholars assembly chose Dr. Bhimrao Ambedkar, the President of Constitution Assembly of Indian Constitution.
which was implemented on 26 January 1950, and thus India became democratic republican country. Since then we celebrate 26 January in the commemoration of Republic Day every year. The national flag is unfurled all over the country. Government buildings, schools, colleges, government offices, and so on. Sports and grand marches are conducted in every state and district centers. A grand march passes through the Rajpath in New Delhi. There is an organization of cultural program. Also, the demonstration of arms and ammunition is organized. People from all over the country and abroad come to enjoy the celebration. Now the question arises, are we really enjoying liberty? Do we have freedom? I would like to assure you, unless we have our own laws to govern ourselves, we are still under clutches. Let us praise and honor our great leaders who sacrificed their lives for us. समारोह में कुड़ुख उराव नृत्य भी किया गया। स्कूल का यह कार्यक्रम कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आदिवासी तरीके से राष्ट्रीय त्यौहार मनाते अन्य आदिवासी भाई बहन भी देख सकें। दोस्तों, मैं यह वीडियो हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि और लोग भी समझ सकें और इस स्कूल के कार्यक्रम और स्कूल के बारे में जान सकें। ओ लगी।